सक्सेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको, क्या हमें एलिमिनेट करना चाहिए सक्सेस के लिए, बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज सक्सेस। सो सक्सेस, जैसे मैंने लास्ट वीक कवर किया था, सक्सेस हैज टू विंग्स, वन इज स्पिरिचुअल सक्सेस एंड वन इज मटेरियल सक्सेस, राइट? You know these cards, one we did yesterday and one we did last week for people who were there. Okay. Now, of course, you can take notes. You can take notes, but rather than also, of course, you can take notes, but of course, just also pay attention and make a register and look for your insights. And I'm just sharing. To have success in your life, you must eliminate what? Fear. Of course, we'll talk about it, but I just want to tell you the 6 things you should eliminate from your life. आपको अपने लाइफ से निकालना है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हेट्रेड. I just give me 1 second. Give me 1 second. Yeah. Hatred. Okay. Next, slander. Slander means defaming somebody, talking kachara about somebody, right? Treason. Treason means betrayal, धोखा देना. Jealousy and revenge. Jealousy and revenge. तो वीडियो पॉज हो गया. कितना फनी लगता है ना, इतनी सारी लेडीज और सारे चुप बैठे हैं. एनी को बहुत हंसी आ रही है ना? बस अब स्टार्ट. किसी ने पूछा था कि एक कमरे में 7 लेडीज बैठी हैं और बड़ी हैरानी की बात है, बस 7वां आश्चर्य है कि सब लोग चुप हैं. मैम यहाँ तो 14-13 है, सर आ गए. मतलब जो भी है वो ये हैरानी की बात है ना कि 2 लेडीज कितनी रहते हैं, यहाँ इतनी लेडीज चुप बैठी हैं. चलो, let us continue.
And so this is what I had covered. I don't know. I think I lost all of you here only. So these are the six factors which you must eliminate in your life if you want success. Of course, हम लोग सब discuss करेंगे detail. Fear, hatred, slander, treason, jealousy, and revenge. Okay, let's discuss one by one. Ciao. So fear, right? Fear, right? Let's discuss what is this fear. So fear is a parasite that comes and enters into your nervous system and paralyzes you. Right? Also, fear का मतलब होता है false evidence appearing real. False evidence appearing real. Right? So you have to ask yourself, were you born with fear? क्या fear से पैदा हुए थे? Not really, right? That's why do not allow other people to plant fear in you. Right? So आपके बहुत सारे आसपास samples मिलेंगे. अरे शारदा ऐसे मत करो. अरे Annie, what are you doing? This, that. अरे शिल्पी, what are you doing? You're a housewife. क्या करोगी? कैसे करोगी? Loss हो जाएगा. अरे नहीं. Monica, what are you doing? अरे Ritu, what are you doing? Do not allow other people to plant fear in your system. Right? And there will be many people. अरे what are you playing? 300 rupees for a boot camp, 15,000 rupees for a tarot course. सब पैसा गोलमाल हो जाएगा. मत करो. They will want to put fear in your system. So you have to stay away from such samples. And डर किस तरह के होते हैं? Fear of success. And you'll be surprised. And let's put both the point and then discuss. Okay. Fear of success and fear of failure. Fear of success and fear of failure. Right? So let's discuss. So a lot of people times are just fear of being successful. Oh my God, if I get so much of money, what will I do? Where will I put the money? Where will I have to hide the money? Bank में कैसे लोग सब मुझे देखेंगे? That is the problem. And people don't do it. अरे नहीं ठीक. I tell people, okay, do this. नहीं सर ठीक है अभी तो ठीक है. 40 साल में बोलते उम्र हो गया. Fear of success. They just उन लोग को चिंता है कि भाई अगर मैं सक्सेसफुल बन गई तो लोग क्या बोलेंगे. सडनली अचानक लड़की हाउसवाइफ पैसे कमा रही है. अरे क्या हो गया इसको. चलो. That's why people don't want to do that. And of course, the second fear is fear of failure. What if I fail? Yeah. Rather than asking what if you fail, why not just ask yourself, wow, what are the possibilities that will come to me if I succeed? Right. I mean, I keep giving my example. I mean, when I was making my boot camp, when I was making my first course also, ऐसे नहीं यार कैसे सब लोग करेंगे. इतना टीचेबल में अपलोड करना है. 160 वीडियो अपलोड करना है. I said, what if ये अगर निकल गया तो? What if it's just a hit? ऐसे चलो करते हैं. 7 दिन 7 रात मैंने रात काला किया एंड मैंने 160 वीडियोस बनाए. ऑल द रिकॉर्डिंग और टीचेबल मैंने 7 दिन में बनाया है. With that हिंदी इंग्लिश whatever शुद्ध हिंदी. ऐसे लोग यार what if अगर हो गया तो कैसा रहेगा. ऐसे चलो करते हैं. So that probably and वो आता है जब आप कर देते हो. आप नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ अरे वीडियो बनाओ सर वीडियो बट व्हेन दे मेक द फर्स्ट एंड देन आपको उसको रोकना पड़ता है कि भैया और मत बनाओ. बिकॉज वो शुरू हो जाते हैं फिर. राइट. सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ. जब भी आप डरो किसी और के बारे में सोचो. Whenever you have fear, think of serving other people. That ये मेरे वीडियो से, ये मेरे पोस्ट से, ये मेरे लाइव सेशन से कितना लोगों का भला होगा. राइट. मैंने ये सैटरडे सेशन क्यों शुरू किया. मैं तो सीधा पहले Q&A ले रहा था. मैं वीडियो देखो खाली सैटरडे संडे आओ क्वेश्चन आंसर पूछो टाटा बाय बाय हो जाओ. फिर मुझे खुद अंदर में जो मेरे साथ पिछले 8, 10, 12 महीने से है वो जानेंगे. मैं पहले लाइव सेशन लेता ही नहीं था. मैं सैटरडे को
I just come half an hour 45 minutes, क्या questions है, चलो बस खत्म. And then I realized, okay, maybe I'm not doing justice to people. लोग मुझे बोले, अरे यार नवल तेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेरे फ्रेंड लोग जो स्टूडेंट, अरे बहुत टाइम वेस्ट होगा सर, क्या इनको अपने आप पढ़ने दो. ऐसे नहीं. What if by me coming live every Saturday they can get a new hope and new inspiration to walk ahead. ऐसे चलो करते हैं. And I did it and I'm enjoying it. And I don't know आप लोग मेरे से कितना सीखते हैं, but every Saturday and Sunday I learn so much from you guys. तो मेरे अंदर वो डर है नहीं. I'm telling you, ये जो आज मैंने प्रोग्राम बनाया है, मैंने पिछले 1 घंटे में बनाया ये. मैंने टॉपिक डिक्लेयर कर दिया था लास्ट वीक की, and in last one hour I made this thing because I'm so happy doing it. मुझे फर्क नहीं ऐसा, ठीक है क्या होगा, गलत होगा, चलो कुछ ना कुछ मेकअप कर लेंगे. So the thing is, get over your fear. Get over your fear. It is something which people have told you कि तुम नहीं कर पाओगी. It's nothing like that. And today this boy with red t-shirt नया लिया है, is telling you that you can do it. You can do it. Okay, let's go ahead. Again, you have to also understand that why are people fear? लोगों को डर लगता क्यों है? That you must, one of the reason you should that you must not act against any spiritual, moral and social laws. Right? अगर आप चीटिंग करोगे तब आपको डर लगेगा, ओके उसको पता चल गया तो क्या होगा. राइट? अगर आपने कोई सोशल लॉ तोड़ा, आपने चोरी की है, टाका डाला है, चीटिंग किया है बैंक के साथ, then you will be worried, oh okay, what if she finds out, what if he finds out. अगर आपने कोई इलीगल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, अरे यार अगर कल चलना बंद हो गया तो, अरे ये कैसे, अरे अगर हैक हो गया तो, वायरस लग गया तो. Only remember, you have to be afraid when you are breaking a certain law. Right? Again, those who act against such laws are continuously chased by fear. Are continuously chased by fear. Right? आप डेली कुछ ना कुछ देखोगे, अरे फ्री नेटफ्लिक्स अकाउंट फॉर 3 months, Amazon प्राइम अकाउंट का 1 year, Z5 का फन लाइफ टाइम. have to ask yourself, is it legal? नहीं करोगे तो डर आपको हमेशा लगेगा. And also understand there are many sources of fear. Stop the source and such fears will vanish. Stop the source and such fears will vanish. और आपको I told again, this is my favorite line which my mentors always told me. आप उन लोगों के 5 लोगों के एवरेज रहेंगे जिनके साथ आप घूमते फिरते हो, या जिनकी बातें सुनते हो, जिनकी किताबें पढ़ते हो. Right? So surround yourself with people who are always encouraging you, who are always motivating you, who are always telling you to do. अगर आपको कैपेसिटी 5 है, वो आपको 10 के लिए इंस्पायर करे कि 10 करो. आपको उन लोगों का रहना पड़ेगा. अब आप देखो, when you be with somebody, there is no way you will ever have fear. You will ever have fear. That is the first thing you have to really eliminate from your aura if you want success. Second is hatred. Okay, we'll run this and then we'll take your questions. Second is hatred. Right? Again, आपको समझना पड़ेगा, hatred creates disturbance in the symphony of a life's plan and in the purpose that you're conceiving in your consciousness. आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप सोल के बारे में जान रहे हो, बट अंदर में अगर हेट्रेड है, आप इट इज लाइक पुटिंग एनर्जी आना तो चाहती है, बट आपके यहाँ पे एक तो बैरियर है. अब बोलेंगे कुछ हो क्यों नहीं रहा सर, कुछ हो क्यों नहीं रहा सर, हम इतना मेडिटेशन कर, बट अंदर में हेट्रेड है. It burns a wire and takes the electricity out of the system. What a beautiful line the author has said. आपके अंदर की सारे सर्किट को पूरा जला देगा. It eats you up, and when it eats you, you can forget about being successful. वो अंदर ही अंदर आपको खा जाएगा.
एंड जब अंदर से आप खोखले हो जाओगे तो आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? Again, very common question which people have, that, but sir, what about people who are full of hatred and are successful? Right? You will be surprised, because they are not. They have money, but they cannot enjoy it. They are fighting with their partners all night till the morning. They have children, but the children don't talk to them, and their lives are also miserable. You go and check up anybody. अगर उनके अंदर में hatred है, look at their lives. Look at their life. आपको दूर से लगता है अच्छा गाड़ी चला रहा है, Mercedes, ये वो. Figure out what is happening then internally. Like, nobody wants to talk to them. Nobody wants to go out with them. Nobody wants to, spend time with them. अरे जब भी किसी के बारे में बात करें, अरे वो फलाना, वो ये. You have to ask yourself, number one, what are you earning money for? If it is not creating love in your heart. They do not enjoy what they have. Very important, guys. Now, learn this line and put it in your wherever you sit. When you do not enjoy what you have, spiritually and physically, we are a failure. आप किसी चीज को spiritually enjoy नहीं कर सकते हो, physically enjoy नहीं कर सकते हो, तो आप failure है. आप कितने लोगों को देखोगे, पैसे बहुत हैं, but blood pressure, but heart problems, but arthritis. Enjoy नहीं कर पाए पैसे. If you have something, you have money, but you can't have spiritual peace, what is the point? Right? And वो सब रहेगा, and ये सब, how you can never be a success if you have hatred inside you. I mean, I'll tell you one incident that happened with me. So hatred totally paralyzes your mechanism of success and makes you take actions that leads you towards disaster. अगर हम आपके क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर आपके अंदर सिर्फ हेट्रेड है, तब आप सक्सेस के बारे में सोचेंगे कैसे? फिर आप सक्सेस के बारे में सोचोगे भी तो आप ऐसे सोचते कि उसको कैसे हराया जाए. राइट? आप अपने जीतने के बारे में नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि उसको कैसे हराया जाए. एंड जब हम दूसरों को हराने के मैकेनिज्म से उतरते हैं फील्ड में, हम ऑलरेडी हार चुके हैं. So are you guys realizing something? Is it descending in your aura what we are discussing? Right. So one of these things happened with me a couple of years back, that of course I was in a relationship, and somehow that person just in the end said, okay, not happening. मैं तब शादी तक बात पहुंच गई थी. Right? It was just कि बस अब 1-2 families happy with this. What happened? Close to 6-7 years back. Her name was Shweta. And then one day finally she said कि नहीं अब नहीं होगा. Why? He said because you're not educated enough. I said मतलब. He said no, the guy जिसका रिश्ता आया है is from IIM Bangalore and he's super successful. So I said, but we spent like amazing time together. She said nothing happening. Now मेरे अंदर दो choices थी. I could hate her for the rest of my life, or I could just let her go and have peace with me. Of course, 1-2 दिन, 7 दिन, 10 दिन रहा था मेरे अंदर, but I said it's okay. Always understand, guys. Always understand there is nothing bigger in life than your peace. भूल जाओ वो क्या सोचेगा, वो क्या कर रहा है. If it gives you peace to forgive the person,
to ask for forgiveness from the person, to meditate and bless the person, you will be at a much better place. Because what is the point in hating someone and you spending sleepless nights? My mentor also told me that when you hate somebody, you should dig 2 graves. जब आप किसी को हेट कर, आप अपने 2 कबर खोद लो, एक अपने लिए, एक उसके लिए. To ask yourself, this is what I asked when I was forgiving the girl. That, I mean, it's okay. We were together for quite some time. हम लोग 3, 4, 5, 6 महीने साथ में थे, and we spent good time. And but yeah, I think I should just respect her for the time she spent with me. Right? Let's cherish those memories. And it's okay. कोई बात नहीं. Rather than hating, क्या होगा hate करके? When you hate, you are basically radiating an energy of hatred. And you will attract those same kind of people who are already hating somebody in their lives. बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वैसा हो जाएगा. So it is for your own good that you should throw this energy out of your system. Rather than thinking, अरे वो गलत है, it's a simple thing. You just ask yourself, okay, what do I need to learn from this situation? मेरे को इस सिचुएशन से क्या सीखने की जरूरत है? एंड ये इंसान जो मेरे पास आया है, वो मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, या मुझ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है. एंड यूनिवर्स ने बस उसको एक माध्यम बनाया है कि शायद मैं सीखूं एंड मैं एक बेटर इंसान बनूं. And you should be happy and thankful to them कि वो आपके लाइफ में आए और आपको कुछ सिखा के चले गए. Even when you meet them tomorrow, I'm not saying कि आपको जाके उनको डिनर पे बुलाना है, but there should not be a feeling of hatred. Imagine if you die tomorrow morning. Do you want to leave this world with a feeling of hatred in you? So that you carry the same thing in your next life, and in your next life, and in your next life. Not really worth it, guys. Not really worth it. आप देखोगे, suddenly you will see the other person who you hate is enjoying his life. Maldives में छुट्टी कर रहा है and enjoying his life. You like, what is happening? अरे I am only hating people. उसका तो मजा कर रहा है भाई. बिजनेस क्लास में घूम रहा है, मालदीव, साउथ अफ्रीका बीच में घूम रहा है. What is the point? Who's burning inside? Nobody else but you. Not worth it. Okay, cool. What questions do you have for me? And it's a deep topic, and yeah, we will be open to discussing anything. If you want to share something regarding fear or something regarding hatred, if you have. अच्छा, गीता, yes, गीता जी, पूछिए. Okay, hi sir, good morning. Okay, I want to share my fear. जो अभी आप slide दिखा रहे थे, तब भी मेरे mind में चल रहा था. See, professionally, and I want to tell there is a myth. मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ, कभी break नहीं लिया, even maternity पे भी नहीं. And in my offices, there is a very common myth that working women personal life are not good. I have heard this many times. कि जितनी भी वर्किंग वुमेन है उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती है, ऐसे कुछ है. सो आई वांट टू टॉक अबाउट माय फेयर. इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, आई नेवर डिस्क्लोज माय पर्सनल लाइफ इन सोशल मीडिया. आई एम हैप्पी. Let's go ahead. And you want to share something, or we're going to cover one more topic and you want to share? We'll come back after topic. We'll come back. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है, we'll take your thing. Okay. अच्छा आनी, चलो बताओ. Today's question. Nothing much. Just want to know who this log is all about. लोग कौन है? वो हमें क्यों जज करेंगे? सर ही बोलते हैं. नवल सर is right here. इन्होंने हमें सिखाया. वो why will
We give rights to other judges. Simple concept. We are we. That's all. Am I correct, sir? Exactly. Thank you, sir. Yeah, Monica ji. हेलो Welcome, सर। Roshna. Yeah, Monica. आप तो जॉब करने के लिए कहीं बाहर जाते हो, मेरा अपना पर्सनल बिजनेस, मतलब मैं हस्बैंड के साथ ज्वाइन किया, तब भी लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि आप क्यों कर रहे हो, आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं और आपको क्या जरूरत है, भैया है ना संभालने के लिए, सर है ना संभालने के लिए, तो लेट इट बी, मेरी फैमिली है, मेरा फ्यूचर है, मुझे करना है, फॉरगेट इट, हार में जाए लोग। ये एटीट्यूड रखोगे ना, किसी की परवाह नहीं करोगे। एंड द सेकंड टॉपिक इज हेट्रेड। जितना हम किसी से भी हेट करेंगे, हम अपने पास नेगेटिव एनर्जी को बुला रहे हैं, अपना ऑरा खुद वीक कर रहे हैं और बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं। तो हमें क्यों हेट करना है? द थिंग इज सिंपली सर ने समझाया है फॉरगिवनेस प्रेयर, और मैंने वो किया है और मैंने शेयर भी किया था अपनी इसी क्लास में कि जब मैंने फॉरगिव करना शुरू किया, मुझे बहुत पीस मिला और मेरा जिनके साथ रिलेशन डिस्टर्ब था इतना स्मूथ हो गया, इतना स्मूथ हो गया कि मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट डेज या वीकली वंस हमारी बहुत नॉर्मल और अच्छी वाली बात होती है। वो पास टाइम जो था वो सब खत्म हो गया, मतलब ना, मुझे नहीं लगता शायद उनको भी ध्यान है या नहीं है करके, क्योंकि हमारी बातें जब होती है ना बहुत ही स्मूथ होती है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो पुरानी बातें या पुराना जो भी गिल्ट था या जो बात हमें हर्ट हुई थी वो याद भी होगा। Forgiveness prayer is like magic. So, thank you, sir. Monica. Thank you, Monica. All right, chalo. The third is slandering. Third is slandering. What does it? I'm sure the आपको फोटो काफी चीज बता रही होगी, आपको फोटो काफी चीज बता रही होगी that what is the next thing. Slandering is basically defaming someone, right? Of course, इसका मतलब किसी के बारे में किसी को बोलना, कान भरना, false rumors बोलना, all that, किसी को बदनाम करना, that is slandering. Again, what will happen? It will disturb your mind, right? Because आप देख रहे हो कि हाँ, who is that next person जिसको मैं किसी के बारे में बोल सकूं, A की बातें B को बोल सकूं, and फिर B की बातें F को बोल सकूं, F की बातें W को बोल सकूं. So much in your mind, can you imagine? It burns the communication lines that you are building, right? फिर आप देखोगे जैसे जैसे जो जनरली थोड़े स्पिरिचुअली इवॉल्व है और ज्यादा अपने जो पर्सनल डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, you will see that those people will start staying away from you. वो बोलेंगे नहीं यार, ये बार बार आती है, खाली दूसरे के बारे में बात ही करती है, कुछ अच्छा तो बात करती नहीं है. So they will say, when you tell them कि can I meet you, they will say thank you but no thank you. तब की जो सारी कम्युनिकेशन लाइंस है वो तोड़ देती है when you start slandering people. And success goes through communication. आप जितने लोगों से कम्युनिकेट करोगे आप उतना ही सक्सेसफुल रहोगे. आप ये कम्युनिकेशन सिस्टम इज अराउंड यू. भले आप किसी को ईमेल करो, फेसबुक करो, व्हाट्सएप करो, इंस्टा करो, व्हाटएवर, आपकी कम्युनिकेशन, आपके so many systems are around you. But when you engage in slander, the system is burned in many places and is eventually destroyed, and you become the victim of your own slander. आपको लगेगा आप ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, किसी को कान भर के कि अरे यार चलो मैं उसको उसके बारे में बता देती हूँ, वो मेरी दोस्त बन जाएगी. बट यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, राइट? जिसको आप बोलोगे वो तुरंत समझ जाएगी. आज मेरे को किसी और के बारे में बोली है, परसों किसी को मेरे बारे में बोलेगी. तो भाई इससे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन बना कर रखो बिना मास्क पहनकर. Right? So why do you have to slander? Why do you have to slander? There is so much of abundance in life. आपको slander करने की जरूरत क्या है? And हम होते कौन है लोगों को जज करने वाले? Right? My mentor always told me that judge others when you are perfect.
and judge others when you are perfect. I'm like, okay, I'm not even 1 crore miles close to perfect. So why should I judge? ठीक है, वो कर रही है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, मैं किसी को क्यों जाके किसी के बारे में बोलूं? A slanderer buries himself in his or her own grave. His or her own grave. And imagine आपके दिमाग में वो फैक्ट्री चल रहा है, अरे ये अच्छी, वो अच्छी, अच्छा खराब, वो खराब, ये अदर, इसको बोलो, इसको बोलो, इसको बोलो. So much of crazy thing you're doing from a mind which can create prosperity and abundance for you. To start defaming someone. भले मैं even in this community, tarot community, भले आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से हो उधर, do not look down on somebody who just maybe come a week back. अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें नहीं आता Zoom, तुम्हें इंटरप्रिटेशन नहीं आता, मैं बहुत साल से सर के साथ हूँ. Never do that. आप आज करोगे, 6 महीना बाद आपके साथ कोई करेगा. Life is very, very amazing, right? So stop doing that. Stop defaming someone. But ठीक है, it's okay. Do not bury yourself in your self-made grave. Again, very, very simple. I was reading this author's book. He said, if you have any problem, meet them and talk about it. If you have a problem, meet them and talk about it. Right? Now, for example, I'll give you my example only. Right? When people don't register in boot camp, right? Boot camp में register नहीं करते हैं, तो क्या मेरे दिमाग में गुस्सा है? Maybe for that 5-10 minutes. But then I realize, okay, let me talk to them. Let me send them individual messages. And आपने देखा होगा बहुत लोग मेरे साथ मैसेज करने के बाद रिप्लाई किए हैं, हाँ सर ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए. I said, why should I go and tell, अरे देखो वो उसने नहीं किया, अरे उसके पास पैसे नहीं है, अरे वो ऐसी लड़की, अरे वो वैसा है. What is the point? बात करो, सेटल करो, हाँ ठीक है, अगर नहीं दे सकते तो नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं. अभी मैं इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, मैं फ्री में नहीं दे सकता. राइट? So it is. For example, I love this line which author says, if the problem is for $10, just say, okay, half for you, half for me, it is over. Half for you, half for me, it is over. No panga, no jhagda, no disturbances. Solve your problem with courage and understanding and humility so that you can go ahead. Right? Courage, understanding and humility so that you can go. Again, मैं हर slide में बता रहा हूँ, it is always about your peace, not about what the other will feel after you say something. How will this situation turn out? No. How are you feeling after that? Are you more at peace? तो मुझे कोई बोला सर आप 2 इंस्टॉलमेंट में कर दो, ऐसा कोई बात नहीं. You pay 5,000 now, pay 10,000 later, no problem. मैं फ्राइडे को लोग, I know what I see on Friday, मैं बस देखता हूँ कि लोगों के अंदर भूख है कि नहीं. I just see whether they are hungry to learn. If you are hungry to learn, I have like 56 bhog to give you. I have like a gigantic restaurant to feed you if you are hungry. But if you're not hungry, I mean, there is nothing much I can do for you. Right? You will be surprised. You will be surprised. This girl came. She was in the class only. There's a girl called Uma. So मैंने से पूछा, I said, मैम आपने register नहीं किया? No, I think it's a money making class. You didn't teach anything to me. Can you imagine? In this 5 days, after 5 days, girl is telling me, sir, it's a money making class. You didn't teach me anything. I was thinking of learning tarot. I said, नहीं, मैं 5 दिन आपको गुड्डी उड़ाना सिखा रहा था. How to fly a kite. Right. जब 300 में उसको आप 3 लाख का सामान दे दो तो भी आदमी का पेट नहीं भरेगा. मैं पता, I wish I could show you the WhatsApp. You know what line I told her? I said, thank you, ma'am. Thank you for your feedback. That's it. I told them. मैं क्या करूं, लड़ाई करूं उससे? आपको पता नहीं मैं कितना महान आदमी हूं, मेरे 1000 स्टूडेंट्स हैं, आप क्या? ऐसे नहीं. ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर फीडबैक. What will you say? I say, let's have compassion for the person. Let him go. Right?
अगेन आप स्लैंडर करोगे, आप लोगों के कान भरोगे, दूसरे लोगों को बताओगे, यू आर बेसिकली अलाउइंग कार्मिक वीड्स ऑन योर पाथ। आप अपने ही रास्ते में ऑब्स्टिकल्स फेंक रहे हो कि चलो ये लो, ये पत्थर लो, आगे चलो, ये पत्थर लो, आगे चलो, rather than हटाने के जगह आप वो पत्थर गिरा रहे हो। So do not let karmic weeds increase your path by इधर का उधर, उधर उधर, also called gossip। कहीं है किसी का प्रॉब्लम है तो बात करो, चुप। Make sense? Okay. Any questions? Any questions so far? Any questions so far regarding this topic? Oh, all clear? Nice. नीलम इस सर पकड़ लिया सर, आज क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? Okay. Sorry, you want to say something? Yes, Neelam. Actually, I was thinking too many incidents, whatever was happening last 2 years around me. तो वो बहुत सारी चीजें कंटिन्यू इट कम्स इन माय माइंड कि लोग है ना कैसे छोटी छोटी चीजें करते हैं और दैट थिंग्स नेवर कीप यू नो एनी वैल्यू आल्सो बट स्टिल दे कीप ऑन डूइंग टू हर्ट समवन, टू बी यू नो टू शो यू दैट यू आर पावरफुल और टू मेक यू डाउन। वो इतनी छोटी चीजें होती हैं, एट द एंड उनको है ना, द प्रॉब्लम इज दिस, मेरा है ना, मैं मुंह पर सामने जाके बात कर लेती हूँ कि आपने ऐसा किया था, दिस इज नॉट गुड, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। तो मेरे साथ लोग क्या करते हैं, तो दे लाइक टू बी यू नो लिटिल डिस्टेंस की ये मुंह पर आके बोल देगी, तो वो इशू आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे रिलेशंस में ही है ना लोगों ने कुछ इश्यूज क्रिएट किए एंड आई वाज लाइक कि ठीक है कर लो एंड अगेन आई वाज कंटिन्यूइंग विद देम without any hate or anything because they are my family. I used to think like this, but all of a sudden it happens कि उनकी family जैसे extend होती है and the lady came to me and to spoke to me everything, तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। and the finally things it happened like this कि वो पूरी family ने मुझे कट कर दिया। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने सिलेंडर किया कि वो उन्होंने सिलेंडर किया कि व्हाट वाज द थिंग, और इट्स माय नेचर, आई शुड नॉट डू एनीथिंग, आई शुड नॉट रिस्पॉन्ड देम। सो आई वाज इनटू दैट कि लोग कितनी इजीली आपको गलत बता देते हैं और आपकी चीजों को गलत बता देते हैं और आपको ही ट्रैप किया होता है हर एक चीज में, और उसके बाद ये फील कराते हैं कि दैट यू आर रॉन्ग। बट एनीहाउ मैं तो उससे बाहर निकल आई। आई कांट हियर यू सर। Sorry, can you hear me now? Yeah, yes. Yeah, but yeah, thank you for sharing, Neelam. Thank you for, yeah. So these sessions are us to give you insights and maybe what we are doing or what we have done or what we need to do, so that you know at least evolution is happening always. Yeah, Sharda ji, please ask your question. हाँ शारदा जी। क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मैं सिलेंडरिंग नहीं करती। अच्छा बात सुनना, कई बार क्या होता है कि सुनना भी बहुत मुश्किल लग जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, अच्छी है वो, लेकिन क्या है उसको दूसरों की बातें, देखो हम उसमें गए थे मीटिंग में तो वो ये कर रही थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा ही करती है, उसको इस चीज से ज्यादा करने में मजा आता है। तो आखिर जब सुनते सुनते मैं तंग हो जाती हूँ तो उसको कहती हूँ अरे छोड़ो ना इसको, हमने क्या करना है, रहने दो, तुम अपनी बात करो। तो इससे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, तो उसको कैसे समझाऊं? क्योंकि उसको बात बोल देती हूँ मैं कि हाँ इसे बंद करो, अपनी ही बात करो, उसकी छोड़ दो। Okay, good. So let me do a role play with you. ठीक है? So शारदा जी, आप वो दोस्त बनो और मैं आप बनती हूँ। That's a nice line. आप वो दोस्त बनो एंड मैं आप बनती हूँ, ठीक है? तब आप मेरे को बता, आप स्लैंडर कर रहे हो किसी के लिए मेरे को, ठीक है? चलो let's start the topic. बताओ, चलो शुरू करो। अरे क्या तूने देखा था, वहां गए थे हम तो उसने क्या किया आशा ने, अरे उसको तो मौका मिले ना, बस वो तो फ्री की फोटो खिंचवाने के लिए रहती है, मौका मिले तो थोड़े से तूने देखा वो टीवी में प्रोग्राम आ रहा था कि हम लोग बताया कि वो मैच कब शुरू ना, तूने देखा वो? अरे यार क्या अच्छा प्रोग्राम था वो यार, मैं भी सोच रहा हूँ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दूं। हाँ सॉरी, तो क्या बोल रही थी?
हाँ, मैं यही कह रही थी कि उसको मौका मिलता है फोटो खिंचवाने का, तो पैसे दे के दिखाने के लिए कि मैंने खाना बांटा है, पैसे दे अरे देगी और फोटो खिंचवा लेगी। आज ही मेरा वो फोन आया था यार, आज ही मेरा फोन आया था, किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का, बोलते कार्ड वार्ड ले लो, परेशान करते रहते। अच्छा क्या बोल रहे थे आप, सॉरी? अच्छा छोड़, रहने दे। मैं Exactly. उसको This is how you break the pattern. This is how you break the pattern. आपको पैटर्न ब्रेक करना है। हाँ जी, हाँ जी, वो बोलेंगे यार इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, भागो यहाँ से। मैं करती हूँ, उसको यही कहती हूँ कि इसकी बात छोड़, उससे हमने क्या लेना देना, मत कर रही बोलो, है तो करने नहीं दो। वो मत बोलो। आप ऐसे बोलो तो आपको लगेगा कि वो आपके टीचर है, आप उसके टीचर, आप उसको समझा रहे हो। और किसी को कहानी सुनने में, किसी को एडवाइस सुनना अच्छा नहीं लगता। हाँ सही। जैसे अरे यार कुछ बात, अरे अच्छा क्या, अरे मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल ही गई वो बोलेंगे, मैं क्या एजेंडा लेके आई थी, मुझे तो याद ही नहीं है। ट्राई दैट, इट्स वर्क एवरी टाइम, आई हैव यूज्ड इट एवरी टाइम। गाना भी चल गया अभी, ओके चलो। ओके कूल। सो नेक्स्ट इज बिट्रेयल। द नेक्स्ट इज बिट्रेयल। द नेक्स्ट इज बिट्रेयल। थोड़ा सा खतरनाक डायग्राम है, मेरे को यही मिला गूगल में, तो झट से ही बना दिया मैंने। नेक्स्ट इज बिट्रेयल। ओके, व्हाट इज ट्रीजन? इट्स आल्सो कॉल्ड ट्रीजन, बिट्रेयल। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा इसमें डिस्कशन के बारे में है नहीं। स्टे अ फ्रेंड विथ whomever you were a friend, right? बिकॉज आपने एक साथ दोस्ती की, अब एक साथ आपका दोस्त नहीं है, और आप जाके उसके बारे में या उसको लॉस कराने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू स्टैब समबडी एट द बैक। इज इट रियली वर्थ इट? आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ सीक्रेट शेयर की थी, एंड आपने जाके उसको घर 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 सब जगह बता दिया, व्हाट इज द पॉइंट? किसी ने आपको ट्रस्ट किया है, किसी ने आपको ट्रस्ट किया है, सो व्हाट इज द पॉइंट इन dealing with the whole stuff and telling other people? Do not betray him or her and do not stab him or in the back. Because की अभी वर्ल्ड भी इतनी छोटी हो गई है ना, तो कोई बात छुपी नहीं रहेगी। यू विल फील नहीं मैंने इसको बताया, किसी को नहीं बताएगी, या किसी को नहीं बताया जाएगा, तो सबसे पहली बात वो फैलेगी, राइट? My mentor Acharya Hector, Acharya Hector, he told me you should have loyalty to the absent. I was like, wow, what a line. You should have loyalty to the absent. That means अगर मैं सुरभि के साथ हूँ तो मुझे सोमा के बारे में बात नहीं करना चाहिए। मैं अगर नीरू के साथ हूँ तो मुझे गगनजीत के बारे में, हर्षा के बारे में, शैली के बारे में, शिल्पी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। You have to be loyal to the absent. Again, very, very important line written by the author. If you are active in betrayal, right, spiritual powers will not inspire you, neither protect you, nor give you success. Very, very important line. अगला बस सोचते कि नहीं, बस मैं धोखा दे दे के लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी. You can say goodbye to your spiritual powers. Because they will not either inspire you, they will not protect you, neither they will give you success. Neither they will give you success. Right? So very, 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 very important. I mean, if you don't like somebody and you want to not talk to him, you can just tell the person, yeah, these are certain things I don't like about you. Yeah, so if you can change, great. Otherwise, it's okay. We'll just maintain our distance. We'll just maintain our distance. Right? आप इतना चार्ज करो, मैं इतनी चार्ज कर रही हूँ, बस मैं आपको बताने वाले थे your client is coming to me. Simple. And don't try and steal some, not steal. Don't try and tell somebody, oh अच्छा वो रीडिंग अच्छी नहीं करती, मैं आपको फ्री में एक तो क्रिस्टल भी दे दूंगी, एक तो ये भी दे दूंगी, एक तो वो भी दे दूंगी। एंड आपका क्लाइंट, आपको लगेगा यार उसका क्लाइंट को लगेगा कि या ये तो अच्छी कर रही है। You have to ask yourself, are you manipulating the client, or are you just doing
to betray the trust which your friend had shown you. So this is what I used to do when I was teaching actively since the last 15 years. तो पहले मैं ये करता था, right? अगर कोई मेरे को फोन करे, नवल जी हम चाहते हैं कि आप हमारे इवेंट में डीजेइंग करें, एंड आई वाज लाइक नहीं मैं बिजी हूँ, अच्छा आप किसी का नाम ले सकते हो क्या? नहीं नहीं सर सब बेकार है सर, कोई फायदा नहीं है। अच्छा मैं आपके गुरु है, बोला सर वो आप तो बेकार है, वो बहुत महंगा लेगा, आपको अच्छा काम नहीं करेगा। एंड देन आई रियलाइज मैं जितना ऐसा बोल रहा था ना, मुझे काम मिलना बंद हो गया, बिकॉज आई वाज जस्ट जो लोग मुझे सिखाए थे, जो लोग मुझे हेल्प किए थे, मैं उन्हीं के बारे में गलत बातें बोल रहा था। No matter what your expectations were from someone, and if today it's not there, that doesn't give you a power to betray him, to stab him or her in the back, or make sure or to pray for his or her failure. The fifth and the sixth is jealousy and revenge. And the fifth and the sixth is jealousy and revenge. The amazing diagram. The fifth and the sixth is jealousy and revenge. Jealousy and revenge are destructive emotions, guys. Jealousy and revenge are destructive emotions. Again, very, very important written by the author. They not only damage your body, but also damage your brain. Right? रिवेंज नहीं, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे क्लाइंट लिया, उसके पास इतने सारे क्लाइंट्स कैसे आ गए, अरे उसके इंस्टाग्राम में इतना वीडियोस कैसे व्यूज आ गए, अरे सर ने उसको 4 बार क्वेश्चन के लिए बुलाया, मेरे को 2 बार खाली बुलाया। It damages your body and damages your brain. A jealous and revengeful businessman soon loses his head, then his business. आप देख लो, जितने लोग उसमें घुसने में गए ना, दैट उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, पहले खुद डिस्ट्रॉय हो गए। Jealous people destroy their own future because jealousy causes irrationality in the mind and leads them to destructive actions. Right? Because your mind सही काम करता नहीं है, आप सब गलत डिसीजन लेते हो jealousy में। Right? आप बोलोगे नहीं, उसके क्लाइंट को बता दो कि उसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसकी सीक्रेट उसको थर्ड पर्सन को बता दो ताकि वो उसके रिश्ते टूट जाए उससे। फिर आप ये सब आप जब क्लाइंट से बात करो, आप उसको बोल सकते हैं व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग ऑल दैट, नहीं उसने मेरे साथ गलत किया, अरे किया कोई बात नहीं। आप अगर आप भी सेम कर रहे हो तो आप में उसमें क्या फर्क है? Imagine the amount of energy you're wasting in jealousy and planning for revenge. Can you imagine? कितना टाइम आप स्पेंड करो, नहीं उसने मुझे हर्ट किया, मैं उसको डबल हर्ट करूंगी। बाप रे बाप, बहुत एनर्जी लगता है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव बीन देयर 8-9 years बैक। बहुत एनर्जी लगता है एंड आप पहले खत्म हो जाते हो। Right? That's why that I'll play a song and then maybe you can go through the emotions which will help you. Yeah. Jealousy is like a strong viper which bites its container. अब आप समझ जाओ। Jealousy is like a strong snake जो आपके अंदर है, जो आपको ही डसेगा। एंड नोबडी सेइंग कि आप परफेक्ट है। ये सब इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे अंदर में 5%, 10%, 25%, 20%, 30%, 40%, 50% है। तो ये रिफ्यूज मत करिए समझने के लिए, नहीं ये मेरे अंदर कुछ नहीं, आपके अंदर है। बट द क्वेश्चन इज आप आज से क्या स्टेप्स लेते हो इसको हटाने के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
that is more important, right? Fear, hatred, slandering, jealousy, and revenge. These 5 are very, very important if you want really success in your life. हम आगे सेशन और कवर करेंगे that success को कैसे लाना चाहिए, बट लाने के लिए आपके इसको पहले आपके ऑरा से निकालना पड़ेगा, तभी तो आप ऑरा में नई चीजें भर सकोगे. And that's why in pranic healing we are first taught purification and then we are taught meditation. Because जो ऑरा में कचरा भरा हुआ है उसमें डिवाइन एनर्जी जाएगा तो और कचरा ही भरेगा, right? But when आपके ऑरा से कचरा निकल जाएगा, then once divine energy